So it is with great honor now that we invite our chief guest, who is visionary in the field of finance, the founder of Quant Group, Mr. Sandeep Tandon, to grace this occasion. And we are going to see him, on the screen right now. So I request you to please get all the message that he has to share with us today. Welcome, Sandeep sir. That is digital, but welcome to the event. Good morning, everybody. Let me start in a different manner. So I heard a couple of questions being talked about in today's environment, existence of difficult to exist in the financial market, challenges which we are facing. Okay, so let's address some of these things through my presentation. Okay, see, we all understand and we already talk about that world is very dynamic. Okay, world is much more complex as compared to what we have seen in last 20, 30 years, but last few years, particularly last 3, 4 years, particularly, we have seen how technology has evolved a lot, regulations have changed, transparency has improved, okay? And every day you're looking at some or other data point and you find it extremely difficult for us to digest, okay? That, oh, now this, we have to learn this also. We have to understand these things also. We have to understand the correlation of these additional data points. So that's the way world has been. Okay. So very nicely we talk about that if we live in a dynamic world, then why our investment thesis should be in a very static manner. Okay. And this what we have been preaching about, a very static manner approach. Okay. So if you really recollect, how this investment thesis has evolved over a period of time, I was at risk showcasing some of things in one of the channels there for yesterday in CNBC, and we talked about how world has evolved now. So if you recollect, few years back or maybe till 2000, we all live in one dimensional approach. Okay, we used to talk about purely on the valuation aspect, what the world talks about. In India, people generally say, I'm a fundamental guy, I'm a fundamental person, I'm a long-term investor. Okay, all these theses are very nice, but it's a one dimension only. So when you're talking about that we live in a complex world, then and world is actually is all about multidimensional, then investment thesis also has to be multidimensional. Our research aspect also has to be multidimensional. So we all started with qualitative aspect or the valuation aspect of the market, and post 2000 meltdown, which happened, the dot-com bubble, that's the way the genesis of quant came into picture, how quantitative data came into picture in a big way. And we started looking at the quant in these things. Many firms like GSAM or AQR or many eminent firms globally evolved. Okay. And in 2008, when the Lehman crisis happened, even that time also active managers suffered, even quant fund also suffered. Okay, so over a period of time, by 2012, other dimension came into picture. It's all about behavior finance. We're talking about behavior data. Okay, which what we call it in today's world, how quantamental as a thesis emerged. Okay, where you are trying to combine qualitative, quantitative, and behavior aspect. Okay, and that's a thesis which got evolved. Okay, now with that background, I'll come to the presentation. So understanding too important that try to cover all 3-4 dimensions there, and 4 dimension is time. Okay, which a lot of people deny it, that nobody can time the market, timing is bad. We have been taught. Okay, so I want to break a couple of myths today. Okay, we have grown with a lot of myths. The biggest myth is in this world is about everybody saying I'm a long term. Okay, because it's a lazy way of saying I'm long term guy. Because managing long term risk is very easy, and managing short term and near term risk is very difficult. And there, if you can manage your short term and near term risk well, you will generate extra alpha for your investors. Okay, and this is what where we specialize. We say that we capture long-term, medium-term, and long-term risk equally well, because it is very important to have a balance in our portfolio, not looking everything is a long-term. So we manage money from a treasury style. We have a decades view, long-term view, short-term view, medium-term view, cash call, hedge call, okay, or even a special situation. Now let's come and talk about the title of the thing is the predictive analytics. Okay, how predictive analytics plays a role. If you really look at in live example, we all have grown, at least I can talk about myself. We have grown in this environment where we do land up in doing, most of us doing postmortem analysis. Let's look at live example. Day before yesterday, Infosys result came.
And prior to that, lot of noise was there. The Infosys should come out with the best number in the industry, and people were looking forward. The stock has rallied, and the result was below the expectation. The guidance was bad. Call happened, and stock was down. GDR was down 12%, and stock was down 8% yesterday. Okay, I'm just giving you it's a postmortem analysis now. People do event is unfolded. Price has already opened cap down, and investors really don't know what to do. So anything which you talk about a postmortem analysis, okay, and I'm not talking about unknown risk. This was not unknown risk. This was a known risk because IT sector was doing bad. So when we talk about known risk, you can at least quantify that. Unknown risk, yes, I agree, nobody can quantify, but there's a difference opinion when somebody says this was unknown risk. No, it was not unknown risk because it was known to the people in last 1.5 years that IT is struggling because of tough conditions in US, and we're talking about global recession, hard or soft landing in US. This is the background. Obviously, we knew that part. So let's talk about now criticizing these things is very easy. What is a solution? Okay. So we brought the concept of predictive analytics, which we have built over a period of last 30 years. In a different role, I have been building it. And within Quant also from 2007-8, we practice these things. So when we talk about predictive analytics, let's understand we are not astrologer to say that we can predict the market which side is going to move tomorrow morning. What we are trying to talk about that if you recollect your school days or the kindergarten days or nursery days in the drawing book, you have dots, okay, and when you connect those dots, a picture emerges, okay, and this is exactly what we do in our predictive analytics model. As you grow up in the first standard, the size of the dots also increases. The full page, you see a bigger picture emerging. As you go to first, second standard, then you start playing with puzzles, okay, and you building blocks, and then you connect them and you say some building structure is getting formed or somebody is making a different structure. That's the way how we have grown to connect the dots. We all understand that. In a similar manner, when we talk about predictive analytics, what exactly we do? We try to bring both mathematically, both dependent and independent variable, as much data as possible. Okay. So we run a very complex multivariance model where thousands of data points are involved. Okay. And we try to connect the data and try to see what picture emerges. Okay. That what is that. And it is not so perfect. You can say this is the way because world is dynamic and data points are also changing. So your picture is also continuously evolving or tweaking marginally. Okay. So at any given time when we see these data points are there, we will like to connect the dot and see how it looks. Okay. And that is the way we define predictive analytics. So predictive analytics could be a backbone for AI today, or AI, ML, or machine learning, or new technique. Jesus has been involved. When 30 years back we started, there was no concept of AI or sort of thing. But to analytics itself, in today's world, the importance of analytics is very, very important. And that's what we want to talk about. Let's understand at Quant what we try to do. Okay. So the Quant word of Quant mutual fund comes from the background that we quantify everything. Okay. Whether you talk about sentiments data, whether you talk about valuation analytics, whether you talk about risk appetite, liquidity, geopolitical volatility, or any perceived analytics which we have built over a period of time, as much as we can quantify, we say quant. That's the way. So we are not quantitative house. A lot of people confuse with algorithms and other thing. We quantify everything mathematically, statically, or in a very scientific manner. And that's the way the genesis of quant comes into picture. So very nicely we say at Quant Mutual Fund that objectivity is our religion and data is God. Okay. So there's no scope of subjectivity. And this is something we educate our investors, our clients, and our distributors, even our own team. When I talk to my team, we talk about, in my own company, I always say there's no value of my own views. We say it has to be backed by data. When any analyst or money manager come to us and we say, this is what he feels, okay, we always show me the data. Don't give me your own narrative. Data is God. Show me the data. If it is backed by data, then we are willing to believe. Okay. So that is the strength. And now in the whole world, the data analytic thesis is building everything. In every business, it's not about just stock market or the forecasting ability or the mutual fund business. Any business which you do, today's world, the analytics plays a very, very important role. Okay.
And that's the reason we very nicely say that we bring a mint fresh approach towards data analytics. So we are data driven house. Everything revolves around data. Why data is so important? Ultimately it reduces the human biases. Okay, we all have multiple human biases. Okay, and and it is very natural when you do any action, whether you do your own business or you have any relationship, whether you invest in the market, your preconceived notions or biases are always there. Okay, depends on the environment which you have grown, depending on the age, depending on the gender, depending on the risk appetite, lot of data point, but everybody has biases. Okay, and the biggest challenge which we have seen in the market, though we all know that we should not have emotional attachment, but ultimately we land up with huge emotional attachment and exits becomes very difficult. So the most important aspect when in the business of Quant mutual fund, we talk about that buying is important. So we say buying is art and selling is data science. So exits are more important than the buying. That is the one of the key differential which I have learned in my 30 years. Okay, so this entire framework of predictive analytics was built from a lot of mistakes which we have made. We understood what mistakes we are making on regular basis, on consistent basis, and how well we can overcome that. Okay, so that is the key genesis which we bring. That mistakes will happen as long we put a process in place and we don't repeat those mistakes, then we will be more successful. Okay, as a human being, we will make mistake, we'll make new mistake, but we should not repeat those mistakes. So this entire thesis about a data-driven approach we bring at Quant, we practice at Quant Mutual Fund. Let's talk about more, which I explain you very briefly about how predictive analytics work. Okay, so as a human being, we have our own fear and greed phenomena. We have, every individual has certain characteristics. The amount of stress you can manage, the anxiety which you can manage, okay, the affinity towards certain things which you have, and it's all depends on individual to individual. Okay, so this is a very important aspect to understand. Okay, so let me explain some of these points even in Hindi also. Okay, so predictive analytics क्या है? हम आगे की चीजों को कैसे फोरकास्ट करते हैं? ओके, हम डेटा से फोरकास्ट करते हैं. अपने ह्यूमन बाइसेस जो आते हैं, अपना फियर, ग्रीड, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, जो भी हम देखते हैं, जो एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वही कैरेक्टरिस्टिक स्टॉक्स में भी मिलती है, वही कैरेक्टरिस्टिक हमको एसेट क्लासेस में भी मिलती है. ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इसको आज आगे बात करूंगा, जो हम लोग साइंटिफिकली बात करते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं एनर्जी, अगर हम लोग आज बात कर रहे हैं, आप इस रूम में प्रेजेंट है और मैं दूर से बात करते हैं, सर्टेन एनर्जी लेवल बिटवीन अस. ओके, और पूरा जो यूनिवर्स इज ऑल अबाउट एनर्जी. और एनर्जी जो का जो ब्यूटी, इट नेवर डाई, यू नो, इट चेंजेस ओनली फॉर्म, हाइड्रो टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल टू न्यूक्लियर, और वी टॉक अबाउट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली हमारा मार्केट भी बहुत यूनिक है. तो मनी फ्लो एनालिसिस हमने जो बिल्ड किया है, पूरी थीसिस ये एनर्जी की पूरी थीसिस से लिंक होती है. हाउ मनी शिफ्ट फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अदर, हाई रिस्क टू लो रिस्क एनवायरमेंट. हाई रिस्क टू लो रिस्क एनवायरमेंट में जैसे पानी माउंटेन से वैली की तरफ जाता है, सिमिलरली पैसा जो है हाई रिस्क के लो रिस्क में शिफ्ट हो जाता है. जब आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीजें लगने लगती है वैल्यूएशन की, तो आप लोग उसको बुक बेक करके दूसरी चीज ले लेते हैं. ओके, सिमिलरली अगर हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे हम लोग बहुत बात करते हैं मार्केट में, आज इतने लाख करोड़ का लॉस हो गया, ग्लोबली मार्केट में मेल्टडाउन था, या इतने लाख करोड़ बन गए आज. ओके, वो सब पेपर पे है. What is important कि आपने पैसा तोड़ा, मैंने बनाया, मैंने तोड़ा, किसी और ने बनाया. सिमिलरली एक एसेट क्लास पैसा तोड़ती है, दूसरे एसेट क्लास में पैसा शिफ्ट होता है. तो ये जो मिथ है कि पैसा इतना इरोजन हो गया, जितना वाइप आउट हो गया, वो मिथ है. ओके, अगर मार्केट को हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो पैसा शिफ्ट हो जाता है. और यही हमारी एक इंपॉर्टेंट थीसिस है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में, जिसको हम लोग मनी फ्लो एनालिसिस बोलते हैं, जो हमको सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन, एसेट क्लास रोटेशन में बहुत हेल्प करती है. ओके, बट उसको हमको समझना चाहिए. बहुत सिंपल नहीं होता है कि हम लोग 30 साल से इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस चीज को सीखा है, हम लोगों ने गलतियां करके इसको इम्प्रूव किया है और समझा है कि इसको इस तरह इसको कैपिटलाइज करना है. ओके, वो एक स्ट्रेंथ, जैसे हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक्स के लिए भी. ओके, अब हम कुछ चीजों को आगे बढ़ा के बात करते हैं. अब जैसे मार्केट के अंदर अगर हम देखें, जैसे पुराना
थीसिस बहुत सारी चीजें ग्रेजुअली बिल्ड होती है, ट्रेडिशनल टूल, कैपकेम मॉडल और एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। अभी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाएंगे तो हम लोग अभी नेक्स्ट बुक लिख रहे हैं, उसमें हम लिखाएंगे कि ये सब चीजें आउटडेटेड है, ये वर्क ही नहीं करती। ओके, हाउ द कंसेप्ट ऑफ एडेप्टिव एसेट एलोकेशन इज गेनिंग मोमेंटम, किसी को उसको नोबेल अवार्ड भी मिला है। वो सब चीजें हम लोग बताते नहीं है। अगर हम वो सब चीजें बताना शुरू कर देंगे तो बहुत लोगों की दुकान दुनिया में बंद हो जाएगी, क्योंकि हम गलत चीजों से प्रैक्टिस करके बड़े हुए हैं। आज हम जो कंसेप्ट की बात करते हैं, तो क्वांट म्यूचुअल फंड नई तरह की चीजें से लाने की बात करता है, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों को नया पर्सपेक्टिव देते हैं कि एडेप्टिव एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए। किस तरह का एनवायरनमेंट है, पहले वो एनवायरनमेंट को तो समझिए। हर एनवायरनमेंट में सेम स्ट्रेटजी काम नहीं करती है कि आप 10 साल पहले भी वही करते थे, आज भी वही करते हो, 10 साल बाद भी वही करेंगे। वर्ल्ड बहुत अलग हो गया है। एनवायरनमेंट को देखते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट को हम अडॉप्ट करते हैं और वो एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोसेस में। तो हम लोग बात करते हैं कि वी आर बियॉन्ड ट्रेडिशनल एंड टूल्स एंड टेक्निक, सो वी ब्रिंग अ न्यू एस्पेक्ट इन लाइफ। ओके, so we bring the concept of earth analytics. How earth analytics, हम लोग अभी मॉनसून से परेशान है इस समय की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पानी आ रहा है। 2 महीने पहले हम लोग परेशान थे कि एल नीनो का इफेक्ट है, पानी नहीं आएगा, डेफरमेंट हो गया, अभी सरप्लस हो गया। ओके, तो आप अर्थ एनालिटिक्स अगर आप देखिए एग्री बेस्ड इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, उसी तरीके से हम लोग इसको कंसेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंपैक्ट करती है आपके इकोनॉमी को। ओके, तो हम लोग किस तरह से नॉर्थ पोल का शिफ्टिंग इंपैक्ट करता है इकोनॉमी को। बहुत सारी चीजें हम लोग ये परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू बात करते हैं कि परसेप्शन क्या है, जिसको हम लोग पी मल्टीपल की तरह ढूंढते हैं कि पी मल्टीपल इतना है, इसका क्यों इसको पी मल्टीपल इतना मिलना चाहिए। वो सिंपल प्राइस से लिंक्ड है। अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो आपका पी मल्टीपल चेंज हो जाता है, कि अर्निंग्स और प्राइस चेंज तो आपका पी मल्टीपल। बट वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पी मल्टीपल के पीछे एक परसेप्शन एनालिटिक्स काम करती है कि वो कैसे परसेप्शन बिल्ड होता है ओवर पीरियड टाइम, उसको मैथमेटिकली डिकोड करते हैं। लिक्विडिटी एनालिटिक्स की बात करें, अभी पूरा बाजार इतना चला, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यूएशन तो इतना एक्सपेंसिव हो गया, फिर भी बाजार अलग ढंग का फ्रस्ट्रेशन है। ओके, यही माहौल था जब कोविड हुआ था। कोविड के बाद सर्किट लगा था मार्च 2020 में, उसके बाद मार्च सितंबर आते आते बाजार बहुत भाग गया। तो लोगों को समझ में नहीं है फंडामेंटल क्या चेंज हुआ, बट सबने आके बता दिया तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी। अरे सुनामी थी लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जो खाली लिक्विडिटी कंसेप्ट इतना सिंपल नहीं, जैसे शाम का एफआई का फिगर देख लिया, म्यूचुअल फंड का फिगर देख लिया, टोटल वॉल्यूम देख लिया, लिक्विडिटी हो गई। नहीं, लिक्विडिटी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ग्लोबली कैसे हम इसको कैप्चर करते हैं आज इसमें हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन ग्लोबली लिक्विडिटी और फ्लूइडिटी कैपिटल मार्केट की कैसे प्ले होती है। तो हमारे पास क्या है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू फाइट नेक्स्ट डिकेड बैटल। इस तरह की चीजें आएंगी आगे जाके। हम लोग जैसे मैंने इसमें पिक्चर दिखाई है कि एक वॉल स्ट्रीट की पिक्चर है, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब एंड व्हाट वी आर शोकेसिंग देयर, क्वांट इज हायरिंग लिक्विडिटी एनालिटिक्स, वोलेटिलिटी एनालिटिक्स, क्लाइमेट चेंज एनालिटिक्स, जियो कॉस्मिक एनालिटिक्स, ओके, और साइकिल एनालिस्ट और परसेप्शन एनालिटिक्स। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर ट्राइंग टू गिव यू ग्लिम्पसेस व्हाट इज कमिंग इन द फ्यूचर। जो हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसपे हम चला रहे हैं ना 30 साल से, buy, hold and sit tight long term, that thesis has collapsed globally. Okay, US से learn करना चाहिए how US market is evolved, how those data points have coming. Look at how BlackRock has evolved. They have become a new manufacturer in the world. How the products are evolving. हम लोग चीजों से change नहीं करेंगे तो अपना relevance खत्म हो जाएगा. And that is what we bring the concept of dynamic style of money management. Dynamic style of money management बहुत important है in today's world. Okay, अब हम कुछ चीजें और आपको बात करते हैं। तो हम लोग इसको बात करते हैं परसेप्शन। ये मैंने आपको समझाया कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या है, ए टू जीरो फाइनेंशियल मार्केट है। हम लोग हर चीज जो मार्केट से रिलेटेड होती है उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की स्ट्रेंथ देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 10 मिनट बात किया तो आपको लगेगा अच्छा है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा पॉइंट्स। ये आर्टिकल है, ये एक स्लाइड है जो मैंने 2012 में लिखी थी। ओके, 2012 में हमने इसको प्रिपेयर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरह 2019 एंड से, अगर आप देखेंगे यहाँ रेड कलर मैंने दिखाया है और 2030 तक ये रेड कलर है, कि कैसे जियोपॉलिटिकल, इसमें खाली एक एक्सिस है कि जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी कैसे स्पाइक करेगी और इस पीरियड में क्या क्या होगा। और जब लिखा था तो हम ये 2012 में इधर थे। आप देखिए ये सब प्ले आउट हुआ, करेंसी वॉर 2015 में हुई, इमर्जिंग मार्केट रैली हुआ, इंडिया बबल बस्ट हुआ। आप देखिए 2020 में लिखा था बबल विल बस्टेड इन 2020।
हमने ये पीरियड में क्या क्या लिखा, साइबर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक वॉर, वेदर कंडीशन चेंजेस, हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन, highest ever interest rates, highest ever food prices, highest ever wheat prices, but not highest ever gold prices. और ये सब ट्रेलर हमने 6-8 महीने पहले देखा। और भी बड़ी पिक्चर है जो आप 2025 और 28 के बाद ग्लोबली देखेंगे। ओके, तो ये चैलेंजेस हमने ऑलरेडी फोरकास्ट किए थे। आज से 10 साल पहले लिखना बायोलॉजिकल वॉर, आज से 10 साल पहले बताना कि साइबर वॉर, इकोनॉमिक वॉर और इन्फ्लेशन ऐसा नया रेट पे चला जाएगा, क्रूड प्राइसेस नई हाई पे आएंगे, वीट लाइफ टाइम हाई बनाएगा, वाज वेरी डिफिकल्ट। बट अगर हम 10 साल बाद देखते हैं तो ईयर वाइज ईयर ये चीज प्ले आउट हुई है। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये स्ट्रेंथ है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। हम लोग कैसे मैथमेटिकली, स्टैटिकली, और हम लोग एज ए स्टूडेंट ऑफ अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ओके, इस चीजों को हम कैसे क्वांटिफाई कर पाते हैं, जो के, और ये आसान नहीं है। जब हम मल्टीपल साइकिल्स को, डेटा को स्टडी करते हैं तो हमको ये समझ में आता है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट का क्या है। हर आदमी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वेल्थ हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मनी मैनेजर हो, हम लोग क्या बेच के आते हैं? हम लोग ये बच के आते हैं, इतना पैसा मैंने 5 साल में कमाया, 10 साल में मैंने ये किया, मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आगे जाके मैं इतना आयर दूंगा। हर आदमी रिटर्न्स पे फोकस करता है कि ये रिटर्न्स दिया और ये रिटर्न्स का मेरा पोटेंशियल, ये मेरे ट्रैक रिकॉर्ड। हम इस कंसेप्ट को रिटर्न से एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। रिटर्न्स आर इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज रिस्क मैनेजमेंट। क्या रिस्क लेके आपने रिटर्न्स दिया? तो वी वेरी प्राउडली से वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाय प्रोडक्ट। जिस दिन आप रिस्क पे फोकस कर लेंगे, ओके, रिस्क को अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे, रिटर्न्स तो आने ही वाले हैं। ओके, और आप सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो आप रिस्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंगे। हम लोग तो कितने मैगजीन, पेपर, सब जगह, वेबसाइट्स पे देखते हैं, बहुत कम जगह रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात होती है, सब जगह आउट परफॉर्मेंस की बात होती है, कितने सेक्टर को बीट किया, बट क्या रिस्क लेके बीट किया वो कोई नहीं बताता है। तो हमारे लिए ऐसा म्यूचुअल फंड हम जब देखते हैं तो रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर हम इस चीज को एक चीज तरीके से और भी अगर देखेंगे, ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखिए, इसका हम लोगों को इतने लोगों का इन्वेस्टर हुआ सपोर्ट मिला। आज हमारे पास 29 लाख फोलियो है जो हमने बिल्ड की। ओके, 29 लाख फोलियो हमने बिल्ड किए, 29,000 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड किया। इसको मैं, ये हमारी कुछ 22 स्लाइड, अभी आपको एक खाली लास्ट स्लाइड के साथ मैं एक पॉइंट रखूंगा कि डायनेमिक स्टाइल मनी मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? एडिंग अल्फा एंड सब्ट्रैक्टिंग बीटा। वेरी सिंपल, हम लोग रिस्क को कैसे कम करते हैं और रिटर्न को कैसे बनाते हैं। और मैं इस स्लाइड के साथ आपको लास्ट स्लाइड दिखाता हूं कि ये हमारा परफॉर्मेंस है। इस तरह से हमने मार्च 2020 में जब नीचे का सर्किट लगा था तभी हमने अपना VLRT फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया था, और उसको किस तरह से हमने यहां तक लेके आए। तो क्या आप देखिए, आउट परफॉर्मेंस किस तरह का हमने दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी कैटेगरी में 3 इयर्स 5 इयर्स में नंबर 1। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा शार्पे, सॉर्टिनो, जेनसन अल्फा, उस तरह का क्या पर्सपेक्टिव आता है। और इसके साथ में एक लास्ट स्लाइड और कवर करूंगा, ओके, हमारा जो फ्रेमवर्क के ऊपर, उसके बाद मैं ट्रांसपेंड करूंगा VLRT फ्रेमवर्क। अब ये पूरी हमने थीसिस बताई, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट। तो हमारे पूरे फ्रेमवर्क में हम लोग 1/3 वेटेज देते हैं वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे, 1/3 देते हैं लिक्विडिटी एनालिटिक्स पे, 1/3 रिस्क एपेटाइट, और इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो ये डायनेमिक तरीके से हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है। और टाइम है, टाइम इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग, टाइमिंग इज अबाउट टाइमिंग, टाइमिंग इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम टाइम पे कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। तो टाइम इज अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी एनालिटिक्स, रिस्क एपेटाइट एंड लिक्विडिटी। ओके, आई विल स्टॉप इट हियर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। Thank you so much, Sandeep sir. Despite the fact that you have not been here, but I think we have been able to gather a lot of information from your presentation. Thank you so much, sir.